students, your positive action and positive thinking results in success. So with this thought, let us start our today's class. So children, you know that we have completed chapter number 1, right? And today we are going to start chapter number 2, which is types of software. Okay? And in this chapter, we are going to cover 3 main topics. First is what is software, next is types of software and uses of software. Okay, so these are the main 3 topics which we are going to cover in this chapter. And today we will see what is software. Alright, we will learn today what is software and also we will see what are the different types of software. Alright, so let us begin. Okay children, so let us start chapter number 2, types of software. Okay, so let us see what are the topics which we are going to cover in this chapter. What is software, types of software and uses of software. Okay, so these are the main 3 topics which we are going to learn in this chapter. Alright, so let us begin. Now see children, you can see this image on your screen. Okay, so here you can see different components of the computer system like CPU, monitor, speaker, microphone, mouse, keyboard, screen, etc. Okay, and I hope that all of you have learnt about the different input and output devices of the computer, right? So these are different components of computer system and all these devices are known as hardware of the computer system. Okay, जो भी components आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि monitor, speaker, microphone, mouse, keyboard, CPU, ओके ये सारे जो डिवाइसेस है ये सारे जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर. हार्डवेयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हिच कैन बी टच्ड और फेल्ट. ओके, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, है ना. ये सारे जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर सिस्टम के इसको हम टच कर सकते हैं. ओके, है ना. सो हार्डवेयर आर द components of the computer system which can be touched. Okay, now children let us see what is software. Okay, software is completely opposite to hardware children. Now see the first point of software, what is written over here. Software are the set of instruction that tells a computer exactly what to do. नाउ सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है. ठीक है, सो सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड. हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं. हमने हार्डवेयर को क्या देखा, हार्डवेयर में क्या देखा हमने कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, वेयर एज वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं. Alright, so this is the main difference between hardware and software children. Hardware can be touched whereas software cannot be touched. हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं whereas सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं. Okay, now let us see some other differences between software and hardware. Now see first point in case of software, what is written. Software is a set of instructions that tells a computer exactly what to do. I have already told you just now, the software जो होते हैं वो instructions होते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि exactly क्या करना है. Whereas hardware are the physical parts of computer that we have seen just now, right? जो भी कंप्यूटर के components हम लोगों ने देखे उसको हम बोलते हैं hardware. Okay? Now let us see what is the second point in case of software. Software cannot be executed without hardware. सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकता है हार्डवेयर के बिना. ओके, whereas hardware cannot perform any task without software. Now हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के बिना कोई काम नहीं कर सकता है, which means that एक दूसरे को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे की ज़रूरत है. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है और हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है. ओके,
So software and hardware needs each other. They cannot work without each other. Alright. Now let us move on to third point. Now in third point it is written, software cannot be touched whereas hardware can be seen and touched. सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, whereas हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. Alright, so these are the main 3 points which comes under hardware and software. Okay, now children, let us see what are the types of software. There are 3 main types of software, children, which you can see. First is system software, next is utility software, and the last one is application software. These are the main 3 types of software, and today we are going to see what is system software, and remaining 2 softwares we are going to complete in our next class. Okay, today we will learn what is system software. Now children, let us see what is system software. System software are programs that manage the computer itself. System software क्या होते हैं? System software कुछ ऐसे programs होते हैं जो कंप्यूटर को मैनेज करता है. Okay, and system software is further divided into 3 types: operating system, device drivers, and language translators. These are the 3 types of system software: operating system, device drivers, and language translators. Now let us see first type of system software, okay, which is operating system. First type of system software is operating system. Now see what is written in the first point. It controls input and output devices, manages files and folders, and running application system software. Now children, see what is operating system. Operating system, it controls input and output devices, which means it controls hardware, right? We have seen different types of hardware, children, like monitor, keyboard, CPU, mouse, speaker. Okay, so these are input and output devices. And what is the work of operating system, children? ऑपरेटिंग सिस्टम इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स. ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और फोल्डर्स को भी मैनेज करता है और वो हेल्प करता है to run application system software. We will learn about what is application system software in our next class. Okay, हम पढ़ने वाले हैं तीनों तरह के सॉफ्टवेयर. आज हम कंप्लीट करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को और हमारे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दिस. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑलराइट, सो हियर यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में मदद करता है. ठीक है, वो इट ऑल्सो मैनेजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज वेल. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, वो फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो दीज आर द मेन थिंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम डू. Now let us see what are the examples of operating system. So some of the examples are written over here, like Windows, DOS, Unix and Macintosh. These are some of the examples of operating system. ये सारे operating systems है children. Windows, DOS, Unix and Macintosh. ये सारे operating system है. ठीक है? Now see, this is Windows 10. ओके, दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 10 आप सबने देखा भी होगा. ओके, दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज विंडोज 7. यू ऑल मस्ट हैव सीन विंडोज 7 एज वेल. एंड नेक्स्ट इज विंडोज 10. ओके, विंडोज 10 इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नाउ let us move on ahead and see which is our next point which comes under operating system. Okay, mobile computers such as tablets and smartphones have their own operating systems. Now children, all of you are using mobiles nowadays, right? तो mobiles and smartphones have their own operating system. उनका खुद का operating system होता है, जैसे Android, Bada,
iOS, etc. Okay, so these are operating systems of mobile. Okay, Android, Bada, iOS, these are operating systems of mobiles. Okay, these are operating systems of tablets and smartphones. Okay, all right. So now let us see our next system software, which is device drivers. It is a computer program that controls a particular device such as a printer or pen drive that is connected to the computer. Now, children, all of you must be knowing what is printer, pen drive, right? तो जब भी आप प्रिंटर या पेन ड्राइव जैसे डिवाइसेस को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, सो यू मस्ट हैव सीन वन मैसेज, यू मस्ट हैव सीन वन नोटिस विच इज कमिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, लाइक डिवाइस ड्राइवर इज गेटिंग रेडी, राइट? तो डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है? डिवाइस ड्राइवर इट कंट्रोल्स डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, पेन ड्राइव. ओके, तो जब कभी भी आप प्रिंटर या पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से, तो डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है? वो डिवाइस ड्राइवर जो होता है वो डिवाइसेस को कंट्रोल करता है. ऑलराइट, तो डिवाइस ड्राइवर का यही काम है. ओके, नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हिच इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर translators of programs which translate computer languages such as Java, C++, etc. into machine language. Okay, now children, जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम को कंप्यूटर लैंग्वेज में बनाते हैं. ओके, कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेजेस सच एज जावा, C++. ओके, बट यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट कंप्यूटर जो है इट ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, right? Computer only understands machine language, it only understands zeros and ones. Okay, so जो मशीन लैंग्वेज जो है वही कंप्यूटर को समझ में आता है, पर प्रोग्रामर्स जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को लिखते हैं. सो what is the work of language translators here? Language translators, it converts computer language into machine language. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. कंप्यूटर लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेजेस सच एज जावा, C++, ये सारे कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं, पर ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है. कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है. ओके, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है वो कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ऑलराइट, एंड सम ऑफ द टाइप्स ऑफ language translators are compilers, interpreters and assemblers. Okay, these are some types of language translators. Okay, let me explain it to you once again children. Language translator का क्या काम होता है? Language translator का काम होता है to convert computer languages into machine language. Okay, computer languages such as Java, C++, etc. These are computer languages. So language translators, it converts, it translates computer languages into machine languages. Okay, and some of the types of language translators are compilers, interpreters and assemblers. All right, okay, so this much was there under system software. Okay, what are the three system softwares we have learned children? Operating system, device drivers and language translators. Okay, these are the three types of system software. Now let us see our next topic, which is operations support systems, OSS, or operational support system. Okay, now what is operational support system children? Operational support systems are computer systems which manages network. Okay, operational support system का काम होता है network को manage करना. Operational support system network को manage करता है. This is the work of operational support system or operations support system. Okay, so it manages network. Okay, this much was only there in operational support system. Okay, so okay children, so we have completed first type of software, which is system software. All right,
Okay children, so we have completed first type of software, which is system software, and remaining two softwares we will continue in our next class. Alright, so I will meet you again in the next class. Till then, take care of yourself, eat healthy food, drink lots of water, and I will meet you again in the next class. Bye bye.